starting the topic multivibrator. So this multivibrator, for designing the multivibrator, you require the 555 timer IC. This is the IC, 555 timer IC, and by using this 555 timer IC, you can design the multivibrator. So we already discussed in the last classes the pin configuration, and this is the internal circuit of the 555 timer. Okay. So for this type of circuit, for remembering, you need to draw it. I hope everyone draw the circuit. I already explained the circuit in the last classes. In the 555 timer IC, there are two comparators. One flip-flop is there, and some transistors is there, and a number of resistors are there. So this is about the 555 timer IC. And next, we also discussed the function of different pins. The function of different pins, there are 8 pins, 1, 2, 3, 4, and 5, 6, 7, 8. There are 8 pins in the 555 timer IC, and I will discuss the function of every pin in the last classes. The notes is also shared with you. All of you go through this. Okay. Next is, today I will discuss the next topic related to multivibrator. So first, multivibrator, I already discussed in the last class. This multivibrator is a two-stage device. Multivibrator, it is a two-stage device. Means across the output of multivibrator, you are getting two types of output. Either you are getting the 0 or you are getting the 1. So this type of waveform you are getting across the output. This is a 0 and this is a 1. We also discussed the application of where it is used. This is this application part we already discussed in the last class. Okay, where it is used. And next, you can go through this. A multivibrator is basically a two-stage RC coupled amplifier with positive feedback from the output of one amplifier to the input of the other amplifier, as shown in figure. This is the block diagram. You can basically go through the here. Multivibrator is a switching circuit and may be defined as an electronic circuit that generates non-sinusoidal waveforms such as rectangular wave, sawtooth wave, and square wave. All of you know the rectangular wave. This is like this, or square wave. Or sawtooth wave. This is the nature of sawtooth wave. So this type of wave can be generated by using the multivibrator. Next, multivibrator capable of storing binary number. Whatever the binary numbers or binary data, this can be stored by using the multivibrator. So multivibrator can capable of storing binary numbers, count pulses. Suppose for the counting purpose, 1, 2, 3, 4, 5, 6, like this counting, you can design by using the multivibrator. Then synchronizing arithmetic operation. Synchronizing means suppose after this operation, suppose after addition, then subtraction, then multiplication, like this. So this type of synchronization, it will be capable of doing the multivibrator and performing other essential functions used in digital system. So in case of digital electronics or analog electronics, this 555 timer IC or multivibrator is a very important component. Now, next is this type of multivibrator. There are 3 types of multivibrator. One is the monostable. Other is the astable. And third one is the bistable. So in your syllabus, monostable and astable is included in your syllabus. Bistable is not included in your syllabus. Okay. So we will discuss the monostable and bistable. Next, monostable multivibrator. So this monostable multivibrator, often called one-shot multivibrator. One-shot multivibrator in the sense,
here you provide the trigger in one shot. Just provide the trigger, then relax. So for providing the one shot, you're providing the trigger, you are getting the output. And if you not provide the trigger, you are not getting the output. So one shot multivibrator. So in one shot, you provide the trigger voltage, then off. So when you provide the trigger, you are getting the output. Otherwise, it is you are not getting the output here. So in a pulse generator circuit in which the duration of pulses is determined by RC network. So here your this is the circuit diagram. This part is the internal, and for explaining the working diagram, we also discuss we take the internal components for discussing the working principle of this monostable. And this is the IC 555 IC, and these are the different pins in the IC. Here two components, one resistor and one capacitor is connected. Okay, so this resistor is connected between the pin number 7 and pin number 4. This is pin number 7 is the discharge pin, and capacitor is connected in pin number 6, and pin number ground is pin number, I think 1 it is. Just go through this pin number for the ground. Pin number 1 is the ground. So here this is the pin number 1. So this capacitor is connected in between pin number 6 and pin number 1. You can see the capacitor, and one resistor is connected between pin number 4 and pin number 7. So this is the circuit diagram. By using the IC, how you connect the circuit for the monostable it is, and this diagram is internal diagram of the 555 timer. Whatever the components are there, these components are, and this is the external circuit RA and RC is there. Is it okay? Yes, no? ये दो डायग्राम क्यों क्लियर है तो? Yes, no? Yes, sir. When you design the circuit, you are using the IC, and this one resistor and capacitor is used for making the monostable circuit. And for explaining the principle, working principle, we use the internal components of this 555 timer IC. Here it is. So this is the monostable multivariate circuit using 555 timer, and this is the internal circuit with external connection. So externally we connected the RA and C. One resistor and one capacitor is there, and we are explaining this working by using the internal circuit. Now next is wait a second. Next is this is the waveform generated, input and output waveform, and capacitor voltage waveform. Now you can see here in the circuit, two comparator is there. This is the comparator 1 and comparator 2. This is a transistor. This transistor is connected in the discharge pin number 7 internally, and this capacitor and this RA is externally connected to the circuit. Yes. One flip-flop is there. Flip-flops are basically the registers, and you are getting which is used for storing the signal or for some operation. So here, as for this flip-flop, here SR flip-flop is used. Flip-flop. So here SR flip-flop is used. S and R is the input to the flip-flop, and Q and Q bar is the output to the flip-flop. Okay.
So this is the component used in the internal circuit. Now here this diagram, this VCC is the supply voltage. VCC is the supply voltage to the IC, and these three resistors are act as voltage divider circuit. So you can see in this diagram, suppose this is the VCC. Three resistors are there. At this point, the voltage is VCC. This is one point. Suppose here the voltage is V1. This is one point. Suppose here the voltage is V2. So here in this circuit, this is your point V1, whatever given to this, and this is the point V2. And this part is I'm showing here. So this V1 equal to what? Suppose this all resistance are equal resistance and it is equal to R. So V1 means voltage at this point is what? This is this resistance माने 2R, यहाँ से जो यहाँ ग्राउंड के बीच में जो रेजिस्टेंस है, दिस रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑल रेजिस्टेंस माने 3R into applied voltage. So it is suppose VCC. So here RR cancel out. So voltage V1 equal to what? 2 by 3 VCC. So at this point, the voltage is 2 by 3 VCC. Clear it is? By using the voltage divider. At this point, the voltage is 2 by 3 VCC. Any doubt? Yes, no? Simply ये सर्किट जो है यहाँ पे क्या वोल्टेज हो रहा है? It is the 2 by 3 VCC. माने इस पॉइंट पे. And same voltage at this point is what? Voltage at this point is suppose V2. So this resistance माने R divided by all resistance माने 3R into applied voltage माने VCC. So here RR cancel out and it is 1 by 3 VCC. So at this point the voltage is 1 by 3 VCC. Clear it is up to this? Yes, no? प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, ठीक है. जहां नहीं समझ में आए रोक दो, अगर ज्यादा स्पीड हो जाए तो भी रोक दो. ठीक है. So at this point the value is 2 by 3 VCC and at this point the value is 1 by 3 VCC. Next, this is the trigger terminal and pin number 2 is. So this is comparator 2 and this is comparator 1. So comparator, your trigger terminal is connected to negative terminal of the comparator. Comparator is designed by using the op-amp. We already discussed in the op-amp classes. Comparator is designed by using the op-amp. So here one terminal is positive, other is negative. This positive is connected to 1 by 3 VCC and negative is your trigger pin. Now you can see here negative trigger pulses are applied. Negative trigger pulses क्या होता है? Last week मैंने discuss किया था. Suppose the level voltage is 0. Level voltage 0 माने अगर ट्रिगर पल्स नहीं दिया जा रहा उस समय 0 वोल्टेज दिया गया. तो इफ यू अप्लाई द पॉजिटिव ट्रिगर तो इस टाइप का वेव फॉर्म माने पॉजिटिव ट्रिगर पॉजिटिव वैल्यू. एंड इफ यू अप्लाई द नेगेटिव ट्रिगर तो अगर 0 लेवल वोल्टेज है तो दिस इज द नेगेटिव ट्रिगर. मैं नेगेटिव में वोल्टेज आ रहा है. ओके. तो पॉजिटिव ट्रिगर और नेगेटिव ट्रिगर. ट्रिगर माने क्या होता है? ट्रिगर माने जस्ट फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम यू प्रोवाइड द सिग्नल और इट इज 1. फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम इट इज 1 देन अगेन 0. तो बहुत फ्यू सेकेंड और के लिए उसको 0 दिया, मतलब 1 किया गया, फिर उसके बाद वो
0 हो जाए. So this is very few seconds. It is 1 for very few seconds. Okay, then it is again 0. So this is a trigger voltage. You can provide the trigger for a successive interval. Like suppose थोड़ा देर के लिए ऑन रहा, फिर ऑफ रहा, फिर थोड़ा देर के लिए ऑन रहा, फिर ऑफ रहा. Okay, so you can provide the trigger at a successive time interval like this. Now you can see here we provide the negative trigger and the level voltage is VCC. माने जब ट्रिगर नहीं दिया जा रहा है उस केस में यहाँ ट्रिगर वोल्टेज क्या रह रहा है. पहले जैसे मैंने यहाँ से 0 से एग्जांपल दिया, तो हियर नॉट द 0 वोल्टेज, हियर द वोल्टेज इज VCC. तो जब ट्रिगर नहीं दिया जा रहा है द वोल्टेज इज हियर VCC. यू प्रोवाइड द नेगेटिव ट्रिगर, माने VCC से इसको कम कर दिया गया, माने इट इज अ नेगेटिव ट्रिगर. ओके, so here at the normal case, normal condition, here the voltage is at the dish terminal is VCC, and when you apply the trigger, you provide a negative trigger. माने यहाँ VCC से उसको कम कर दिया, तो for a very small time, it is you provide a negative trigger and it is reached to the 1/3 VCC. Okay, so here this is a negative trigger, and for the applying the trigger voltage, this is the output waveform and this is the voltage across the capacitor. How you are getting the waveform, this is I will explain. Okay, now wait a second. देखो, हाँ क्या, अच्छा, now suppose when you not apply the trigger voltage, that means the voltage at the dish pin is what? जब ट्रिगर वोल्टेज नहीं दे रहे हो तब वोल्टेज कितना है? प्लस VCC when you not provide the trigger voltage. और जब ट्रिगर वोल्टेज दे रहे हो तब कितना हो रहा है? 1/3 VCC से स्लाइटली ग्रेट माने लेस हो रहा है, slightly less than 1/3 VCC. So when you not provide the trigger voltage, at that case here the voltage is VCC. Okay, so here when you not provide the voltage, here the voltage is VCC and plus terminal voltage is 1/3 VCC. तो इसमें बड़ा कौन सा है? नेगेटिव टर्मिनल में VCC और प्लस में 1/3 VCC. तो बड़ा कौन सा हुआ? बोलो, एनीवन? नेगेटिव टर्मिनल में VCC है, यू आर नॉट प्रोवाइडिंग द ट्रिगर, और पॉजिटिव में क्या है? 1/3 VCC. तो नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज ज्यादा हुआ ना? यस, नो? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? नंदन, शुभम, मंदिरा, रौनक, सर ये थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए. देखो, हियर वी आर प्रोवाइडिंग द ट्रिगर वोल्टेज. तो जब ट्रिगर नहीं दिया जा रहा है उस समय यहाँ VCC वोल्टेज है. जब ट्रिगर नहीं दिया गया है, हम लोग नेगेटिव ट्रिगर दे रहे हैं, माने यहाँ VCC जो नॉर्मल कंडीशन में था उसको VCC से कम करके स्लाइटली लेस देन 1/3 VCC. तो जब ट्रिगर दे रहे हैं तो वो 1/3 VCC से थोड़ा सा नीचे चला जा रहा है, और नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे VCC रह रहा है. यही मैं बोल रहा हूँ. From this diagram it is clear. This is the trigger input waveform. So for the normal condition, this is the VCC. When you provide the pulse, it is reached to slightly less than 1/3 VCC. ठीक है, जैसे वेवफॉर्म है देखिए ना, या VCC लाइन है उससे थोड़ा सा और नीचे चला गया, तो 1/3 VCC से थोड़ा सा 0.001 ये हो रहा है, नीचे जा रहा है. क्लियर इट इज? तो सर ट्रिगर इनपुट देने से ये हो रहा है या मतलब VCC ट्रिगर हम लोग दे रहे हैं, नेगेटिव ट्रिगर दे रहे हैं, माने जो पहले था उससे और कम कर दे रहे हैं. एक नॉर्मल है, कोई आदमी खड़ा है, नेगेटिव ट्रिगर माने उसको धकेल के नीचे कर दिया और लेस कर दिया. 5 वोल्टेज था उसको घटा के 2 कर दिया, नेगेटिव ट्रिगर. पॉजिटिव ट्रिगर मैंने 5 नॉर्मल था, हम बढ़ा के 7 कर दिया, पॉजिटिव ट्रिगर. ठीक है, तो यहाँ पे VCC पहले था, इसको 1/3 VCC कर रहे हैं, मैंने VCC/3, तो वो तो कम हो गया ना.
वी आर प्रोवाइडिंग द नेगेटिव थिंग। हाँ सर। हाँ, तो अब नॉर्मल कंडीशन में क्या था, यहाँ पे वीसीसी था, ट्रिगर में वीसीसी था नॉर्मल कंडीशन में जब ट्रिगर नहीं दे रहे हैं, और यहाँ पे प्लस टर्मिनल में क्या है 1/3 माने नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज ज्यादा हो जा रहा है। तो व्हेन द नेगेटिव टर्मिनल वोल्टेज इज हाई, आउटपुट ऑफ द ऑप एम्प इज व्हाट, लो और हाई, 0 और 1। जब नेगेटिव का वोल्टेज ज्यादा होगा योर आउटपुट इज 0, ओके, और जब पॉजिटिव का आउटपुट ज्यादा होगा योर आउटपुट इज 1। So here with the negative voltage here in this case, when you not provide the trigger voltage, your negative terminal voltage is VCC and positive terminal voltage is 1/3 VCC. So your negative terminal voltage is high, so your output is 0. Now अब यहाँ पे आ जाओ, initially your this when the trigger input is you are not apply the trigger input, your initially output waveform is 0. So output waveform 0 माने your Q bar is 0. Q bar is 0 था initially. You can see in the diagram Q bar is 0. Output is 0. Initially 0. And your Q is what? अगर Q bar 0 है तो Q क्या होगा? उसका अपोजिट होगा 1. Q1 means this Q is the input to this transistor Q1. तो ये Q जो कनेक्टेड है, this Q1 का जो ट्रांजिस्टर का इनपुट टर्मिनल जो है वो Q से कनेक्टेड है। तो if the input is 1, that means this transistor is on. Okay, on. So if this transistor is on, in that case, this capacitor is discharged to this path. Which path? I'm just showing you. This capacitor is discharged through this path. ये ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो कैपेसिटर में जो वोल्टेज है वो इसके थ्रू पास हो जाएगा जब ये ऑन होगा। तो इफ द दिस इज डिस्चार्ज थ्रू दिस पाथ, तो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। क्लियर? When this transistor is on, this voltage is passed through the capacitor and here the voltage is 0. That means कंपैरेटर 1 का ये क्या है, 6 नंबर टर्मिनल 0 है और 1 नंबर टर्मिनल में क्या है 2/3 VCC. तो नेगेटिव टर्मिनल वोल्टेज इज हाई कंपेयर्ड टू पॉजिटिव टर्मिनल, तो आउटपुट इज नेगेटिव का हाई है, वेट अ सेकेंड, पॉजिटिव का 0 और नेगेटिव का 1, नेगेटिव का 1। अच्छा ये नेगेटिव का वोल्टेज हाई, तो आउटपुट क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। ठीक है, नेगेटिव वोल्टेज हाई हो रहा है तो आउटपुट इज 0. S is 0, R is 0, your output is what? But this is the truth table for the SR flip flop. So when S is 0, R is 0, S is the input, Q and Q bar is the output. S and R is the input and Q and Q bar is the output. So you can see in the truth table, S and R, when S is 0, R is 0, your output is Q and Q bar. That means जो previous जो output है वही रहेगा, there is no change. It is called the hold condition. When S is 0, R is 1, your Q will be 0 and Q bar will be 1. It is called the reset condition. Means your Q जो है 0 हो रहा है तो it is reset माने 0 होता है, तो Q जो 0 हो रहा है तो it is called the reset condition. S is 1, R is 0. Here the Q is 1 and Q bar is 0. Q 1 हो रहा है तो it is called the set condition. Set means 1, reset means 0. तो Q का स्टेटस के ऊपर से इसका कंडीशन का नाम है. तो for the S0 R1 your Q is reset and for S1 R0 your Q is set. Clear? So set reset two conditions, and for the both is 1, S is 1 and R is 1, this Q and Q bar is the don't care. Don't care in the sense both the Q and QR will be
ट्राई टू गेट सेम वैल्यूज, मतलब या तो दोनों जीरो होना चाहेगा या फिर दोनों वन होना चाहेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। तो इट इज अ फॉरबिडन कंडीशन, ये स्टेट यूज नहीं होता। बोथ एस एंड आर इज वन वन, ये जो नहीं यूज होता, इट इज अ फॉरबिडन कंडीशन। So this is the truth table of flip-flop, SR flip-flop. Here we are using the flip-flop, SR flip-flop. So that's why we discuss the truth table of SR flip-flop. Now, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि when the trigger input is, we are not providing a trigger pulse, your output is zero, okay, and capacitor voltage across the capacitor is also zero. ये पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया। क्लियर इट इज? If you not provide the trigger pulse, output is zero and capacitor voltage is also zero. This point is clear up to this? यहां तक क्लियर है? ये हम लोगों ने जस्ट ये पोर्शन डिस्कस किया अभी तक, ये पोर्शन क्लियर है ना? नाउ नेक्स्ट इज वी प्रोवाइड द ट्रिगर पल्स। अब जो नेगेटिव ट्रिगर दिया गया, क्या हो रहा है? व्हेन यू प्रोवाइड द नेगेटिव ट्रिगर, तो क्या हो रहा है, पहले जो यहाँ पे वोल्टेज जो वीसीसी था, अब वो 1/3 वीसीसी से थोड़ा सा लेस हो जाएगा, थोड़ा सा, माने 0.001 लेस होने से भी हो जाएगा। तो दिस वोल्टेज इज स्लाइटली लेस देन 1/3 वीसीसी। तो जैसे ही नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज 1/3 वीसीसी से थोड़ा सा भी नीचे होगा, तो यहाँ पे 1/3 वीसीसी है, ये वोल्टेज अगर थोड़ा सा भी 1/3 वीसीसी से नीचे हुआ, इन दैट केस योर आउटपुट विल बी व्हाट? यहाँ पे आउटपुट क्या हो जाएगा? बोलो पहले। अब ये नेगेटिव टर्मिनल वोल्टेज का वोल्टेज जो है, नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज 1/3 वीसीसी से छोटा हो गया, और यहाँ पे 1/3, माने पॉजिटिव का वोल्टेज ज्यादा हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा, पॉजिटिव टर्मिनल वोल्टेज में ज्यादा, माने योर आउटपुट विल बी व्हाट? 1। क्लियर? पॉजिटिव का ज्यादा माने आउटपुट 1 हो गया। अच्छा, अब देखो इधर, यहां पे पहले क्या था? पहले तुम्हारा ये 1 था, यहां पे ये 0 था, ये 1 था, और यहां पे आउटपुट तुम्हारा नेगेटिव टर्मिनल का ज्यादा आया, तो यहां पे 0 आ। अब ये 0 हुआ, हाँ ये 0 हुआ, और ये 1 हो गया। ये 0 है, ये तो भाई 0 ही रह गया, और ये 1 हो गया। जैसे ही देखो ये 0 और ये 1 हुआ, योर Q विल बी 0, S इज 0, R इज 1। जैसे ये R का वैल्यू, जैसे ये R का वैल्यू 1 हुआ, क्या होगा? आउटपुट चेंज हो जाएगा। आउटपुट चेंज होगा, योर Q विल बी 0, माने अब ये Q जो है वो 0 हो जाएगा, और ये जो Q बार जो है ये 1 हो जाएगा। क्लियर? जैसे ही R 1 हो गया, ट्रिगर व्हेन यू प्रोवाइड द ट्रिगर वोल्टेज, योर R विल बी 1, तो Q विल बी 0 एंड Q बार विल बी 1। चेंज हो गया। अब Q बार जो तुम्हारा 1 हो गया, माने जैसे ही तुम्हें ट्रिगर वोल्टेज मिला, आउटपुट जो है 1 हो गया। इन द डायग्राम, जैसे ही ट्रिगर वोल्टेज मिला, योर आउटपुट विल बी 1। क्लियर अप टू दिस? ठीक है, जैसे इसको ट्रिगर वोल्टेज मिला, योर आउटपुट इज 1। यस नो? कैसे 1 हुआ? सी इन द डायग्राम। अब देखो, जैसे अब ये 1 हो गया, और Q जो है 0 हो गया। Q 0 माने इस ट्रांजिस्टर का इनपुट जो है वो 0 हो गया। क्लियर? ट्रांजिस्टर का इनपुट 0 हो गया। अब ट्रांजिस्टर का इनपुट 0 होने का मतलब ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया। पहले 1 था तो ऑन था, अब जैसे ट्रांजिस्टर का इनपुट 0 हो गया, माने ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया। दैट मीन्स वट एवर द पाथ टू विच द कैपेसिटर इज डिस्चार्ज, इट इज ऑफ। अब यहां से ये कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा। क्लियर? अब क्या होगा? अब नाउ व्हेन दिस ट्रांजिस्टर, वेट ए सेकेंड, when this transistor is off, माने now this capacitor is not discharging through this path will be break। अब
यहां से डिस्चार्ज नहीं हो पा रहा है तो ये ब्रेक हो गया। अब क्या होगा इन दिस केस, जो दिस कैपेसिटर इज चार्ज थ्रू दिस पाथ, दिस कैपेसिटर इज चार्जिंग थ्रू दिस पाथ, VCC से कनेक्टेड है तो इट इज चार्ज थ्रू दिस पाथ। क्लियर इट इज? तो सेकेंड केस में क्या हो रहा है, when you provide the trigger pulse, your output is 1 and your capacitor is charging from 0, 0 से वो चार्ज होके ऐसे से बढ़ रहा है। क्लियर? अब तो हम लोग अब यहां तक पहुंच गए, यहां तक क्लियर अप टू दिस? when you provide the trigger pulse, your output is high and capacitor is charging, capacitor charge होगा। up to this okay? yes no? yes sir। अब देखो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, तो जैसे ही कैपेसिटर चार्ज हो रहा है 1/3 VCC से कनेक्ट है, वो 1/3 VCC तक पहुंचना चाहेगा लेकिन उसके पहले ब्रेक हो जाएगा। देखो तो दिस कैपेसिटर इज चार्जिंग नाउ दिस पॉइंट, व्हेन दिस वोल्टेज कैपेसिटर इज चार्ज स्लाइटली ग्रेटर देन 2/3 VCC, जैसे ही 2/3 VCC से थोड़ा सा ज्यादा होगा, माने 0.001 ज्यादा, स्लाइटली ग्रेटर देन 2/3 VCC, उस केस में क्या होगा, here the voltage is 2/3 VCC. During the charging period, this voltage is reached slightly greater than 2/3 VCC. जैसे ही 2/3 VCC से थोड़ा सा भी ज्यादा होगा, पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज नेगेटिव टर्मिनल से ज्यादा होगा। ओके, पॉजिटिव ऑफ द कॉम्परेटर वोल्ट माने इस पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज नेगेटिव टर्मिनल से ज्यादा हो गया। तो पॉजिटिव का वोल्टेज ज्यादा हो गया नेगेटिव टर्मिनल से, दैट मीन्स यहाँ आउटपुट में क्या हो जाएगा, बोलो, पॉजिटिव का वोल्टेज ज्यादा हो गया माने आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 और 1 होगा सर, 1 हो जाएगा। नेगेटिव का ज्यादा माने 0, पॉजिटिव का ज्यादा माने 1। तो जैसे पॉजिटिव का वोल्टेज 2/3 VCC से थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाएगा, चार्जिंग हो रहा है इसलिए थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया, तो ये वहां 1 हो जाएगा। अब जैसे ही S1 हो गया, R क्या हो रहा है देखो, हम लोगों ने ट्रिगर दिया फॉर वेरी फ्यू सेकेंड, बहुत माइन्यूट टाइम के लिए 1 किए, फिर वो 0 चला गया। उसको ट्रिगर वोल्टेज दिया, ऐसा नहीं कि दबा के रखना, जस्ट प्रोवाइड द ट्रिगर फॉर अ वेरी फ्यू सेकेंड। तो दिस यू प्रोवाइड द ट्रिगर फॉर अ वेरी फ्यू सेकेंड, उसके बाद फिर अगेन वो ओरिजिनल पोजीशन में चला गया। तो ओरिजिनल पोजीशन में चला गया माने ये फिर 1/3 VCC हो गया है। ठीक है, तो 1/3 VCC हो गया माने, सॉरी VCC हो गया, नॉट 1/3। ये फिर ओरिजिनल पोजीशन में VCC में चला गया, तो VCC हो गया माने नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज हाई, यहाँ पे तो 1/3 VCC है, यहाँ पे VCC हो गया माने नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज हाई हो गया। तो नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज हाई होने का मतलब आउटपुट 0। नेगेटिव टर्मिनल वोल्टेज में ना नॉर्मल कंडीशन क्या, प्लस VCC, यहाँ पे प्लस VCC और यहाँ पे 1/3 VCC, तो नेगेटिव का वोल्टेज हाई हो गया, तो यहाँ 0 हो गया। अब देखो क्या हो रहा है, अब यहाँ S जो 1 हो गया और R जो है 0 हो गया, S1 R0, आउटपुट क्या हो जा रहा है, आउटपुट इज Q इज 1, तो Q जो है वो 1 हो जाएगा, और R जो है Q बार जो है वो 0 हो जाएगा, तो यहाँ Q बार जो है 0 हो गया। तो मैंने here again your Q bar is 0. That means when you provide the trigger voltage, your output is high for a certain time. Okay, your capacitor is charging. Capacitor is just slightly greater than 2/3 VCC. जैसे वो 2/3 VCC से पे पहुंच रहा है, just 0.001 ज्यादा होगा, वेरी बहुत माइन्यूट ज्यादा होगा। अगेन इट इज कैपेसिटर इज दिस। अच्छा, अब देखो जैसे ये 1 हो गया, Q इज 1 हो गया, तो Q 1 हो गया मैंने, ये ट्रांजिस्टर अगेन, ट्रांजिस्टर का इनपुट 1 हो गया, तो जब इनपुट 1 हो गया मैंने, ट्रांजिस्टर अगेन ऑन, ये फिर से ऑन हो गया, मैंने दिस कैपेसिटर इज डिस्चार्ज थ्रू दिस पाथ। तो जैसे ही 2/3 VCC में पहुंचा, ये कैपेसिटर जो है सडन डिस्चार्ज हो जाएगा। क्लियर? फिर अगर वो ट्रिगर पल्स मिलेगा तो अगेन योर आउटपुट इज ऑन, कैपेसिटर इज चार्जिंग, रीच टू 2/3 VCC, जैसे ही 2/3 VCC में पहुंचेगा अगेन डिस्चार्ज, एंड इट इज
continuous. Clear it is? यही चलता रहेगा. क्लियर है या नहीं है? तो समझ. Is the working of this circuit is clear, everyone, or not? If you have any doubt, you can ask. I will repeat. सर बहुत हद तक क्लियर है, अभी एक दूसरी बार खुद पढ़ना पड़ेगा फिर क्लियर होगा. अच्छा, तो जो दूसरी बार पढ़ने के लिए यहाँ पे मैंने नोट्स ऑलरेडी दिया हुआ है. तुम लोग का मल्टीवाइब्रेटर देखो, मैंने आज डिस्कस किया, इसको आज ही देखो. जहां सुविधा होगा कल पूछो, नहीं तो फिर अगर 2 दिन के लिए छोड़ दोगे तो ये टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट है. ये जो मैंने डिस्कस किया, इसको अगर आज देखोगे तो दिमाग में हो जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा. वी ऑलरेडी एक्सप्लेन द प्रोसेस है, गो थ्रू दिस. अगर प्रॉब्लम हो कल पूछ लो. अच्छा, अब देखो, दिस इज द वर्किंग, ऑल अबाउट द वर्किंग. ऑपरेशन लिखा हुआ है. अच्छा, और सर्किट डायग्राम में देख लो. ऑपरेशन तो क्लियर. तो ये देखो, टी हाई माने द टाइम फॉर विच दिस आउटपुट इज हाई. So this is a T high, and this T high is equal to the TC. TC माने वो टाइम जिस पे वो कैपेसिटर इज चार्जिंग. कैपेसिटर इज चार्जिंग फॉर द टाइम TC. तो T high is equal to TC माने टाइम फॉर विच द कैपेसिटर इज चार्जिंग is equal to time for which the output is on or 1. TC is equal to T high. I think this output input, this output voltage, trigger voltage, capacitor voltage, these things are clear to all of you. ये समझ, आउटपुट वेवफॉर्म तो क्लियर है ना? दिस डायग्राम इज क्लियर? सर. अच्छा, तो इसमें एक कैलकुलेशन है. ये टी हाई निकालना होगा कि कितने टाइम के लिए ये हाई रहता है, या आउटपुट जो है कितने टाइम के लिए हाई रहता है. तो टी हाई इज इक्वल टू टीसी. टीसी मीन्स चार्जिंग टाइम ऑफ द कैपेसिटर. इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन है, देख लो जरा. द कैपेसिटर सी हैज टू चेंज चार्ज थ्रू रेजिस्टेंस आर ए. आर ए के थ्रू वो चार्ज हो रहा है. सो द कांस्टेंट आर ए सी, टाइम कांस्टेंट आर ए सी एंड कैपेसिटर वोल्टेज रीच टू 2/3 VCC. तो इस सर्किट में जो टाइम कांस्टेंट होगा वो रेजिस्टेंस इनटू कैपेसिटेंस आर ए सी, और वोल्टेज जो मैक्सिमम रीच हो रहा है वो 2/3 VCC पहुंच रहा है. उसके बाद तो फिर डिस्चार्ज हो रहा है. नाउ द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग द चार्जिंग पीरियड इज गिवन एज VC इक्वल टू. So when the capacitor is charging, so during the charging period, how the capacitor is charging, this will be you will find by using this equation. So suppose if you use this equation, suppose this is the circuit, this is the RA, and suppose this is the C. Here suppose the voltage is VCC. So this capacitor is charging through this path. Okay. So at a suppose time instant t, after the time t or 0 से t, 0 initial time t is the time at which you want to find the voltage across the capacitor. So suppose that at that time, after the time t, the voltage is here the VC. So this VC equal to what? Supply voltage into 1 minus e to the power minus c divided by RAC. RAC is the, means this is the RA and this is the C. This is the formula for finding the voltage during the charging time. So when the capacitor is charging from 0 to any voltage, suppose VC, so what will be the, if the time is t, how much time after the time t you are getting this voltage? This is suppose 0 time and this is suppose t time. Then by using this equation, you will get the VC value if these parameters are given. Here, so VC equal to VCC into 1 minus e to the power minus t by RAC. अच्छा, time taken by the capacitor to charge from 0 to plus 2/3 VCC. अब देखो, here this VC, ये जो VC value है कितना हो रहा है? ये maximum 2/3 VCC तक चार्ज हो रहा है. तो it is equal to, here in this case, particular this case, it is 2/3 VCC.
yeah. So here for this case, here 2 by 3 VCC here. Your VC equal to 2 by 3 VCC. So you put the in this formula VC equal to 2 by 3 VCC. VCC is cancel out. So from this diagram, if you solve this, so you will get the this. Next, here T is equal to what? T means the time for which the capacitor is charging. So here T is your TC. TC is the time for your circuit. TC is the time period for which the capacitor is charged. So you put the T equal to TC, and from this calculation you will get the TC value. So TC value you will get 1.0986 into RAC, and it is approximately equal to 1.1 RAC. So your T high equal to TC equal to 1.1 RAC. Clear it is? Mathematics is clear? Yes, no? Just you put the values in the standard formula. So VC is reached to the 2 by 3 VCC. Here T is your charging time TC, and rest are same. From this you will get the TC, and TC is equal to Ti, and it is equal to 1.1 into RSC. Clear it is? Yes, no? क्या बात है, सन्नाटा क्यों है इतना? क्या प्रॉब्लम है बोलो, मैं डिराइव कर दूंगा, क्या करना है, सामने ही है. जहाँ स्टेप नहीं समझ में आ रहा है बोल दो. Next is the time constant. What is time constant? So time constant is the time required to charge the capacitor through resistor from 0 to 63.2% of the final value. So suppose अगर वो VCC से connected है, VCC से connected है, तो VCC पे पहुंचना चाहेगा चार्ज होके. ओके, तो ये टाइम कांस्टेंट क्या होता है? टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जिसमें वो टोटल जो फाइनल वैल्यू जो चार्ज होके पहुंचना है उसका 63.2%. तो फाइनल जो वैल्यू जिस पे पहुंचना है उसको, उसका 63.2% कितना देर में चार्ज होगा, दैट वैल्यू इज द टाइम कांस्टेंट, एंड इट इज इक्वल टू फॉर द कैपेसिटर सर्किट इट इज इक्वल टू आरसी, resistance through which the capacitor is charging into capacitor value. This is the time constant value. Okay, so here in this case this RAC is the time constant, it is denoted by capital T. Okay, yes, no? ठीक है, आज के लिए इतना ही. क्या बात है सर, भारी हो गया क्या? नहीं सर, लैपटॉप भारी हो गया सर. लैपटॉप भारी हो गया तो घर पे नहीं बैठो? हाँ सर, घर पे ही है.